Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we'll start with technical and derivatives update. In yesterday's trading session, yesterday's swing session was also more of like a range-bound session only. Nifty traded in the very narrow range between 18 to 52, between 18 150 zones. And again, if you see from past two trading session, after the sell-off of 30th December, then the index is slightly mildly consolidating, but with a positive bias. We hope that as soon as the Nifty crosses above 18,300, the high of that day, so that would be a bullish trigger for the index, and index would be trading higher. So there is no technical resistance from those levels, and we could head toward 18,400 and 18,500 zones. So this is a temporary time being hurdle for the Nifty. And similarly, on the sectoral front, if we see yesterday consumer durables were up by more than 1%, but the rest of the other sectors were on the neutral side only. So unless we don't cross above 18,300, fresh leg of rally or momentum would be missing in the index, and we could be trading more in a range bound mode. With the Bank Nifty also, Bank Nifty is also trading after the high after 26 December's bull candle. It is also consolidating in a narrow range only for past three trading session. 18,600 is a crucial level for that, which is acting as a hurdle for the index. As soon as it crosses above 18,600 levels, 42,600 level, 43,600 levels, it would be moving ahead, much ahead. And it could be we can find 1,500 points go from here. And in the yesterday session, if we see, then Axis Bank and IndusInd Bank were showing strength, while as the EU Bank and Bandhan Bank were close in the red also. So overall, the view for the Bank Nifty is on a positive side, and this is a time-wise correction, so that would be better for the index. On the derivatives front, if we see, then we saw a long beta to the tune of 3%, addition of 0.36 million shares, and with the current standing at 12.11 shares. PCR also was above 1 only, with closing at 1.06 levels. And similarly with Bank Nifty PCR also jumped from 0.93 to 1.1 levels. And for the futures share, Bank Nifty also added longs to the tune of 5% in the index. With the options front, if we see in the Nifty, then there is hurdles at 18 to there is support at 18,200 and 18,000 zones with addition of 3.62 and 1.72 million shares respectively. While hurdles can be seen at 18,200 and 18,500. So we are seeing a straddle at this level at 18,200, 18,200. So this would be a make and break level for the index. Similarly, for the Bank Nifty, 43,300 and 43,400 would be acting as a support for the index, and with 43,500 and 44,000 would be acting as a hurdles for the on the going higher side. Coming to the FIs data, FIs were sellers for the cash for a tune of 628 crores, while DIs bought to a tune of 351 crores. In the futures front, if you see, they sold to the tune of 7,400 contracts. So now they are net short by 14,000 contracts. So their long short ratio stands at 45%. And we can keep the stocks to be kept on radar: SBI Life, Titan, JK Cement, and Axis Bank, which are looking strong on charts. So we can see any dip towards the lows can be taken as a opportunity bond. Coming to the SJK is showing a muted opening of 53 point down. So that could be an opportunity if you are moving toward 1800 or 150 levels. So we can place longs from there. So that's it from mine. I'll hand over to Bhavesh sir for more updates. Yeah, hi, good morning, team. So starting with banks, so three banks reported very good set of deposit growth for December quarter. First, Federal Bank, which reported 19% YOY growth, and deposits also crossed milestone of 2 lakh crore during Q3, so that was positive, and it was up 15% on a YOY basis. CASA also improved to 43 basis points, so that is also positive. Then secondly, IndusInd Bank 19% YOY growth in advances, so quite positive, and but CASA was more or less flattish in that case. Third on HDFC Limited, so HDFC's loan assigned to HDFC Bank stood at 8,900 crores compared to 7,500 crores. So again, strong numbers. And there was and loans sold during the 12 months amounted to nearly 36,000 crore versus 27,500 crores in the previous year. So again, overall last 12 months have been positive, and so all three banks actually reported good numbers. Secondly, update on L&T Infotech. Just one second. So LTI Mindtree's president and director
Venugopal Lambu has resigned, and he has joined Mindtree. He joined Mindtree in 2020 and oversaw global markets in merged entity. So this kind of exit is negative for the company, and we also have a hold rating on the stock currently. Then on Tech Mahindra, so Tech Mahindra has been selected to accelerate the digital transformation in Tagawa city of Japan. So Tech Mahindra will leverage its experience in 5G to enable the city become a smart city by digitalization of sports facility and even for tourism industry. So this is like positive for Tech Mahindra. So that's it from me. Over to you, the retail team. Good morning, everyone. Thank you, Bhavish sir. So a few more research news updates from my end. To start with, Railtel Corporation of India, they have received a work order from the Southeastern Coalfield, the limited for providing MPSL VPN service at 529 locations under SECL command area for the period of 5 years. The total work value is 186.19 crores. Next is on BSE. The Sundaraman Ramanamurthy joins as a MD and CEO today. So he is appointed for the 5 years. The exchange to seek the approval from the shareholders to postal ballot on 16th of Jan. Next is on PNC Infratech. The company subsidiary Akkalkot Highways has received appointed a date of 28 December 22 for construction of 6-lane with access control of Greenfield Highway on a section of NH 150C under Bharat Mala project. Next is on Advanced Enzyme Technologies. The company has acquired 50% stake in Sai Ganesh Enzotech Solution and additional 4.83% stake in subsidiary JC Biotech. Lastly, on Satin Credit Care Network, the board will meet on Jan 6 to consider the raising funds through private placement of for non-convertible debentures. So that's all from my mind. I'll hand over to Prabhakar sir for more research updates. Good morning, team. There are few things which have happened. One thing is natural gas prices are down 10%. Crude is down 4%. And the winter has been warm. That is one reason why these prices have corrected, which is very positive for oil marketing companies. So Hindustan Petroleum IOC would be a great beneficiary in this. Reliance Consumer Product forms joint venture with a 100-year-old beverage maker, Sosoyo Hajuri Beverages, and Reliance will be holding 50% stake. Domestic air passenger traffic for airline sector touched 1.29 crores to cross pre-COVID level for December. So December 2019, it was 1.26 crore, so which is higher than this. India coal production rises by 16% to 608 million ton in April-December. This is what government data is saying. There is one report in ET which says that housing demand has risen 19% in December quarter across India, and average prices have risen by 13.9%. Supreme Court yesterday came with a judgment which has said that multiplexes is a private property, so they can regulate the entry of foods and beverages. And but court also has said that free good quality drinking water should be available, and for young newborn babies or young kids, food has to be allowed, and for older people also food has to be allowed. This is positive for PBR and Inox. And FMCG sales in rural area after a very long time has seen a sequential recovery in December. So after a very, very long time, till now only urban areas have seen growth. Rural was going down. Now we are seeing a reversal in that. The result season is starting with TCS on 9th January. On 12th January, we will have Infosys at HCL Tech and Cyient. So maybe, in 3-4 days, we will have about 5-6 major IT companies.
And then 14th January, we will have HDFC Bank. And 17th January, we will have ICICI Lombard and ICICI Pru Life. And yesterday, if we notice, almost top 4-5 life insurance stocks have started to move. We like HDFC Life, SBI Life, and ICICI Pru Life. ICICI Pru Life is value buy. Now, for somebody who is looking at 2 to 3 years time frame, this is one stock to look at. Angel One business update has been given by the company. They say their client base is touched 1.25 crore customers, which is higher by 60% year-on-year basis and 4.8% month-on-month basis. Even their number of orders for month of December is almost 8.62 crores, which is higher by 21.8% month-on-month basis, and even on year-on-year basis, it is higher by 33%. Average client funding book is at 1,375 crores. Month-on-month basis, this has increased to 6.5%, whereas year-on-year basis, it is down 9%. But still, 1,375 crores is a very good margin funding account. Government has said they have a pipeline of 44 port project worth 22,900 crores till 2025. Now, this is in to reduce our logistic cost. Government is activating a lot of ports and connectivity to the ports so that our logistic costs come down. So I think this is very important. Granules India has entered into a strategic partnership with Zenco Zero C to develop and promote carbon-free energy green molecule solution in Andhra Pradesh, Kakinada, for which they have 100 acres facility with an estimated cost of 2,000 crores. Over a period of 5 years, this will be built. DMart has come with their numbers. Standalone revenue for this quarter is 11,304 crores, which is higher by 24% year-on-year basis. Quarter-on-quarter basis, 9% higher. Company has said it has added 4 stores. So the total store count is 306 6 stores. But there is something which is not very good. The store addition is not up to the mark. So they need to at least open 18 stores in the last quarter. Otherwise this revenue growth will not sustain. KIMS board will meet today to raise 300 crores for NCD. The company is growing organically and inorganically. We like KIMS for a long-term purpose also. NTPC starts India's first green energy blending operation in PNG network of NTPC Kawas Township with Gujarat Gas as a joint venture partner. Now currently it will be 5% blending, hydrogen gas will be 5% blending, but over a period of time it will be 20% blending in PNG. So how this project goes will be watched across India. IEX reported their volume. Now there is a fall of 7% in volume to 8,452 million unit in December, while month-on-month basis there is a 9% rise. Now IEX, due to competition and other things, things have not gone well for the stock. It is better to avoid IEX at the current price levels. But whatever banking results have come, quality banks have done better. So something like a Federal Bank, IndusInd Bank, Bank of Baroda has not given numbers, but CSB came with number. Yesterday CSB was higher. So we need to be stock specific. Not every bank is growing at the level one would have expected. So with that, over to you, Kshitija.
थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग एक कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपडेट जो है वो टेक महिंद्रा के ऊपर है। टेक महिंद्रा को सिलेक्शन हुआ एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तकवा सिटी ऑफ जापान से। सो बेसिकली टेक महिंद्रा लिवरेज करेंगे इट्स एक्सपर्टीज इन 5G सेगमेंट में, और वो जो अनेबल करेगी सिटी को स्मार्ट सिटी डिजिटलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से। तो बेसिकली एआई का यूज करके वो इम्प्रूव करेंगे इन एक्सपीरियंस रेसिडेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट पार्क्स और न्यू फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट होगा वो न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और अपस्किल करेंगे लोकल टैलेंट। सो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा टेक महिंद्रा के लिए। देन एलटीआई माइंड्री है, उनके जो प्रेसिडेंट और डायरेक्टर थे वेणुगोपाल लम्बू, उन्होंने रिजाइन किया है। उन्होंने ज्वाइन किया था माइंड्री 2020 में। तो ओवरऑल हम लोग देखे तो ग्लोबल मार्केट्स मर्ज एंटिटी के बाद हाई प्रोफाइल एग्जिस्टेंस रिसेंटली जो मर्ज एंटिटी के बाद रिजाइन करने के बाद ये नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकता है कंपनी के लिए। करंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रेटिंग है स्टॉक के ऊपर। देन फेडरल बैंक के नंबर आए थे, उसमें जो ग्रॉस एडवांसेस ग्रो हुआ है 91.1% से ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 4.3 से अप है। और जो उनका स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ है रिटेल बुक में, और वो अराउंड 19.1% से अप है। और उनका होलसेल क्रेडिट बुक है वो ग्रो हुआ है 90% से। फेडरल बैंक के टोटल डिपॉजिट उन्होंने क्रॉस किए हैं माइलस्टोन 2 लाख करोड़ के अराउंड ड्यूरिंग क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 23 में, और वो अप है ईयर ऑन ईयर 14.8% से और 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। कासा रेशियो में डिक्लाइन देखा गया अराउंड 243 बेसिस पॉइंट का, और वो अभी है 34.25%। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स आए थे। नेट एडवांसेस अप है 19% से ईयर ऑन ईयर और 4.6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और उनका जो हाईएस्ट लोन ग्रोथ है लास्ट 12 क्वार्टर में। देन टोटल डिपॉजिट्स है अप 14.3% से ईयर ऑन ईयर और 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कासा रेशियो में भी डिक्लाइन देखा गया है अराउंड 20 बेसिस पॉइंट से, और अभी वो स्टूड है 42%। देन नेक्स्ट अपडेट है एचडीएफसी लिमिटेड है, उनके भी नंबर्स आते तो लोन असाइन हुआ है एचडीएफसी बैंक को वो अभी अराउंड 8,892 करोड़ का है क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 23 में। हम लोग लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वो 7,468 करोड़ था क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2022 में। उनका जो ग्रॉस डिविडेंड इनकम है क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 23 का वो अराउंड 482 करोड़ है, और लास्ट टाइम था वो 195 करोड़ था क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2022 में। लोन सोल्ड है ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स में, उसकी जो अमाउंट है अराउंड 36,000 करोड़ है, जो लास्ट प्रीवियस ईयर 27,500 करोड़ थी। उनमें ये जो कंपनीज है एचडीएफसी लिमिटेड, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए, और कंटिन्यू हम लोग का बाय रेटिंग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक के ऊपर। देन जो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उनको एक वर्क ऑर्डर मिला है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी से। वो प्रोवाइड करेंगी MPLS VPN सर्विस 529 लोकेशंस में, और ये अंडर होगा SECL कमांड एरिया में, और इसका जो पीरियड है वो 5 इयर्स का होगा, और उसकी जो टोटल वैल्यू ऑफ वर्क होगी वो 186.19 करोड़ होगी। देन नेक्स्ट अपडेट है बीएससी के जो सुंदरमन राममूर्ति है, उन्होंने ज्वाइन किया एज एमडी सीईओ, और वो अपॉइंट हुए 5 इयर्स के टेन्योर के लिए, और टॉप पोजीशन वैकेंट थी ये सिंस जुलाई से, जब आशीष कुमार चौहान ने रिजाइन किया था। देन नेक्स्ट अपडेट है पीएनसी इंफ्राटेक के ऊपर। कंपनी की जो सब्सिडरी है अक्कलकोट हाईवेज, उनको एक रिसीव अपॉइंटेड डेट 28 दिसंबर 2020 में कंस्ट्रक्शन 6 लाइन का जो हाईवे का रिसीव ऑर्डर मिला है, जो एक्सेस करेंगी और कंट्रोल करेंगी ग्रीनफील्ड हाईवे ऑन सेक्शन NH 150C में, और ये अंडर भारत माला प्रोजेक्ट में होगा। नेक्स्ट अपडेट है एडवांस एंजाइम जो टेक्नोलॉजी है, वो कंपनी एक्वायर करेंगी 50% स्टेक इन साई गणेश एनजीटेक सॉल्यूशन में, और एडिशनल जो 4.83 स्टेक है वो सब्सिडरी जेसी बायोटेक करेंगी।
द नेक्स्ट अपडेट इज सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क है, उनकी बोर्ड की मीटिंग है Jan 6 को, जो कंसिडर करेंगे फंड रेजिंग, और ये मोस्टली फंड रेजिंग प्राइवेट प्लेसमेंट्स नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से होगा। देन जो नेचुरल गैस की जो प्राइजेस है वो डाउन है 10% से, और क्रूड की भी 4% से डाउन है, तो ये पॉजिटिव रहेगा OMCs के लिए। तो हिंद पेट्रो IOCL मतलब बेनिफिशियरी रहेगी। हाउसिंग डिमांड प्राइस देखेंगे तो एवरेज प्राइस राइजन हुई है 13.9% से। द नेक्स्ट अपडेट है सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब जजमेंट दिया था कि जो मल्टीप्लेक्सेस है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वो आउटसाइड उनका जो प्रोहिबिटेड फूड और बेवरेजेस था वो प्रीमाइसेस में राइट होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दे शुड अलाउ जो ओल्ड एज है और जो इन्फेंट्स है, चिल्ड्रन है, उनके लिए फ्री ड्रिंकिंग वाटर रखेंगे ऑल विजिटर्स के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है FMCG के ऊपर। FMCG का बहुत क्वार्टर के बाद जो रूरल सेगमेंट है उसमें सिक्वेंशियल रिकवरी देखी गई है दिसंबर मंथ में। अभी रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है, तो 9 जनवरी को TCS का रिजल्ट है, 12 जनवरी को इन्फोसिस, HCL का और साइन का रिजल्ट है, और 14 जनवरी को HDFC बैंक, 17 को ICICI, GI और ICICI प्रूडेंशियल है। कल ही हम लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा कि ICICI जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो स्टॉक्स है उसमें हम लोगों ने बाइंग मोमेंटम और रैली देखी, तो उसमें हम लोग को वो सेगमेंट में HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल स्टॉक अच्छे लगते हैं, और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू बाय रहेगा। मतलब जो इन्वेस्टर्स है 2-3 इयर्स का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, तो ICICI प्रू एक स्टॉक है। देन नेक्स्ट अपडेट है एंजल वन के भी नंबर्स आए थे। क्लाइंट बेस उनका 12.51 मिलियन है, जो अप है 16.7% से ईयर ऑन ईयर और 8.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उनका जो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है वो 0.99 मिलियन है, जो डाउन है 26.2 ईयर ऑन ईयर बेसिस से, और डाउन है 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। देन नेक्स्ट अपडेट है जो डीमार्ट है उसके ऊपर। डीमार्ट का जो स्टोर एडिशन है वो अप टू द मार्क नहीं है, और डीमार्ट के भी नंबर्स आए थे, तो उसमें जो नंबर्स थे उसमें टोटल उनका जो चेन रिटेल ऑपरेटर्स है वो स्टैंडअलोन रेवेन्यू है ऑपरेशन से क्वार्टर दिसंबर में वो अराउंड 11,304 करोड़ है, जो हम लोग रिलेटिवली कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, तो रेवेन्यू 9,065 करोड़ था, और अभी उनके जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है वो 306 है। कंपनी को जो स्टोर एडिशन है वो अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए, तो एक उनके लिए ये स्टोर एडिशन अप टू द मार्क नहीं है। देन नेक्स्ट अपडेट है कीम्स के ऊपर। कीम्स की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जो फंड रेजिंग के लिए होगी NCDs के लिए। कीम्स हम लोग को अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देन नेक्स्ट अपडेट है NTPC और गुजरात गैस के ऊपर। NTPC जो है उन्होंने कमीशन किया है कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा पाइप नेचुरल गैस PNG नेटवर्क NTPC कवास टाउनशिप सूरत में, और ये प्रोजेक्ट के लिए जॉइंट एफर्ट NTPC एंड गुजरात गैस करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट कैसे होता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देन नेक्स्ट अपडेट है IEX के ऊपर। IEX का जो वॉल्यूम है वो राइज हुआ इन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 8,452 MU, बट हम लोग देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की रजिस्टर हुई है 9% मंथ ऑन मंथ, और ग्रोथ है वो 8,452 मिलियन, बट ईयर ऑन ईयर हम लोग कंपेयर करेंगे तो डिक्लाइन हुआ है 7% से, क्योंकि जो हाई रिन्यूएबल एनर्जी का सर्टिफिकेट था उसके कारण। देन बैंकिंग सेगमेंट में नंबर्स बहुत सारे इसमें अच्छे नंबर्स किए, इसमें फेडरल बैंक है, इंडसइंड बैंक है, CSB बैंक है, तो हम लोग को स्टॉक स्पेसिफिक देखने चाहिए इसमें। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning call. Have a nice day.